A very good morning, students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. In today's economics lecture, we are going to discuss about law of demand, its exceptions and assumptions. Let us start one by one. The very first topic, that is law of demand. What is the law of demand? It is the law states that other things being constant, there is inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity, which means that if the prices of the commodity will increase, its demand will decrease and vice versa. What is the meaning of vice versa? Vice versa, that means just opposite of the situation. That means if prices of the commodity will decrease, the demand will increase. So it is the law of demand. This law of demand is represented by the schedule as well. You can see two columns are here. The first column is Px, that is representing the price of X commodity, and the second column is Qx, that is representing the quantity of X commodity. As soon as prices of the commodity decreases from 10 to 9, its quantity demanded increases from 100 units to 150 units, and when more price decreases from 9 to 8, its quantity demanded furthermore increases from 150 to 200 units. This schedule is also representing the law of demand, which states that if the price of the commodity will decrease, its demand will increase and vice versa, which is indicating the inverse relation between price and quantity demanded. Dear students, this is the diagrammatic presentation of law of demand, in which initially the price was OP and the quantity demanded was OQ. As soon as price decreases to OP1, we can see that the quantity demanded increases from OQ to OQ1. The same thing have been explained in this diagram form. The demand curve is sloping downward, and sloping downward in itself is representing the inverse relationship, and that is the law of demand. Now we are coming to the next topic, that is the assumptions of law of demand. What are the assumptions of law of demand? It refers to all other determinants of demand other than the own price of the commodity. That means all the determining factor other than the price comes under the category of assumptions of law of demand. Okay. In the while we are explaining the law of demand, we have stated the line other things remaining constant. So what are the other things remaining constant that have been explained over here? See point wise. The very first, taste and preferences of the consumer must remain constant. We have discussed all these factors in the demand function. So the very first assumption is that whatever the taste and preference of consumer is there, it must remain constant. There must not be any change in the tastes and preferences of the consumer. The second point, there is no change in the income of the buyer. The income of the buyer does not change, neither it increase nor it will be decreased. Third, prices of related goods do not change. That means no change in the price of substitute goods and no change in the price of complementary goods. And the last, consumers do not expect any significant change in the availability of commodity in the near future. Near future को लेके commodity की availability के regard में consumer की कोई भी expectations generate नहीं होनी चाहिए, neither about the shortage nor about the excess quantity available. So all these four factors comes under the category of assumptions of law of demand. Now one question arises, this is why more of a good is purchased when its price falls, or why does demand curve slopes downward? It can be asked in any question form, either the first question form or the second question form. The answer will remain same. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? ये पूछ रहा है कि जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड या फिर हम उसको ज़्यादा परचेस क्यों करते हैं, या फिर जो डिमांड कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होता है. Now let us discuss the answer in the point wise. The very first, law of diminishing marginal utility. Initially also in the earlier chapters we have discussed about law of DMU. What was that? It was that when we used to consume more and more units of a commodity, the additional satisfaction, additional utility keeps on decreasing. So as the additional utilities keep on decreasing, so the consumer is also willing to pay less and less price for the next further commodity. That is why as soon as the price of the commodity decreases, consumer used to purchase more, but if the prices remain constant, then consumer do not purchases the more. Now the second point, income effect. Income effect refers to the effect on quantity demanded when real income of the buyer changes
owing to change in the price of the commodity. Now here comes a term of real income. What is real income? With a fall in price, real income increases and accordingly demand for the commodity expands. Real income is the income that is left out with the consumer for मेकिंग एक्सपेंडिचर. जो भी इनकम कंज्यूमर के पास लेफ्ट आउट होती है, बची हुई होती है एक्सपेंडिचर्स को इनकर करने के लिए, दैट इज नोन एज रियल इनकम. सो एज सुन एज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज एंड अकॉर्डिंगली कंज्यूमर विल डिमांड मोर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. Third, substitution effect. Substitution effect refers to the substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper. Substitution effect क्या है बेटा? जैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी क्या होती है, सस्ती हो जाती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फर्दर किसी और कमोडिटी के प्लेस पे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, जैसे ही एक्स कमोडिटी के प्राइस फॉल हो गए, इट बिकम्स चीपर इन रिलेशन टू कमोडिटी वाई. अब ये वाई के कंपैरिजन में क्या हो गई, चीपर हो गई, सस्ती हो गई. एंड नाउ व्हाट वी यूज टू डू, एंड अकॉर्डिंगली अब जहाँ पे हम लोग अभी तक वाई को यूज़ कर रहे थे, अब हम वहाँ पे उस कमोडिटी को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. दैट बिकम्स द चीपर वन, दैट मीन्स द एक्स कमोडिटी. This is the substitution effect. So as soon as the prices of a commodity decreases, we used to start the particular commodity in the place of its substitute, and as a result its demand in the market increases. Next, size of consumer group. When price of a commodity falls, many more buyers can afford to buy it. ऐसा हो सकता है कि इनिशियली कंज्यूमर्स को, बहुत से कंज्यूमर, एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसा कंज्यूमर का जो उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एज सुन एज इट्स प्राइस डिक्रीजेज, अब क्या होता है कि अब वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में आ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज एंड दे यूज टू परचेज द गुड. इसका एग्जाम्पल हम लोग बेटा ऐसे लेते हैं, जनरली इन द मॉल्स इन द ऑन सीज़न अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को रश कम देखने को मिलता है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑफ सीज़न, जब हम वहाँ पे सेल होती है 20% ऑफ, 30% ऑफ, एट दैट टाइम वी यूज टू सी अ बल्क ऑफ पीपल ओवर देयर. वाई इट इज़ सो? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कि इनिशियली जो उसके MRPs थे उस पर वो बहुत सारे कंज्यूमर्स की रेंज से और बजट से बाहर था, बट एज सुन एज उसमें आपका 40% का डिस्काउंट आ गया, 30% का डिस्काउंट आ गया, तो अब वो बहुत से कंज्यूमर्स के बजट में आ गया, एंड एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर ऑफ साइज विल इंक्रीज, एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेज. एंड द लास्ट वन, दैट इज़ द डिफरेंट यूजेस. गुड्स मे हैव सेवरल यूजेस. कुछ ऐसे गुड्स होते हैं इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्ड, चीज़, स्वीट्स, है ना, और भी फर्दर बहुत से हेड्स हैं जहाँ पे हम लोग मिल्क को यूज़ कर सकते हैं. कर्ड के लिए हो गया, पनीर के लिए हो गया, स्वीट्स के लिए हो गया, चीज़ के लिए हो गया, फर्दर स्वीट डिशेस के लिए हो गया, है ना. सो इफ़ द प्राइसेस ऑफ द मिल्क रिड्यूसेस, जैसे ही मिल्क के प्राइस रिड्यूस होंगे, वी विल स्टार्ट टू पुट इट इन द डिफरेंट यूजेस. अब हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट यूजेस में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. वी यूज़ टू प्रिपेयर द स्वीट्स एट होम, वी यूज़ टू प्रिपेयर द पनीर एज वेल एज होम, वी यूज़ टू प्रिपेयर द कर्ड एज वेल एज एट द home, and we used to prepare the ghee also at the home. So this is the different uses. Accordingly the demand for the milk expand. अब जैसे ही मिल्क सस्ता होगा, इतने सारे यूजेस में हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी. सो दीज आर द ऑल द फैक्टर्स वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, या फिर वाई मोर ऑफ अ कमोडिटीज परचेज व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेज. कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देयर आफ्टर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, size of the consumer group, different uses. Now coming to the next topic, that is the exceptions to the law of demand. What are the exceptions? See, there are some certain fields or areas where law of demand does not apply. कुछ ऐसे सर्टेन फील्ड्स हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, एंड दीज पर्टिकुलर फील्ड्स और दीज पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ नोन एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, दैट मीन्स जहाँ पर प्राइस और कमोडिटी की डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन ना देख के हमको कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, दैट इज़ नोन एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. सो सम ऑफ द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट हेड्स of exceptions to the law of demand. The first one is the articles of distinction. What are the articles of distinction? Distinction, that means separate. So all those goods which used to make you separate from the common crowd are considered as the articles of distinction. See here, according to Professor Veblen, there are certain goods which are demanded only because their prices are very high. कुछ ऐसे certain goods होते हैं वो सिर्फ इसलिए डिमांड किए जाते हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस क्या होती हैं, हाई होती हैं,
इफ़ देयर प्राइसेस फॉल, जैसे उनकी प्राइस फॉल हो जाएगी, डिक्रीज होगी, दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो अब वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का कमोडिटी नहीं रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक द example of Ferrari, it is one of the most expensive car, and that is why it is the article of distinction. But if imagine the situation that the Ferrari comes under the category of the 10 lakh, in that condition it will come under the normal cars, तो वो अब वो आपकी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रह जाएगी। आप उसको देख के ये नहीं बोलोगे अरे यार उसके पास फरारी है, ठीक है। सो व्हाट आर द आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन? वो प्रेशियस गुड्स जो कि आपको क्राउड से सेपरेट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस बोलते हैं। एंड बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई, दैट इज़ वाई दे आर रिप्रेजेंटिंग अ status symbol of yours in the society. So if the price of these goods will fall, they will no longer remain as the article of distinction and you will not demand them. So that means if the price of these type of goods will increase, the demand will increase, and if the price will decrease, the demand will also decrease. For example, expensive cars and diamond ornaments etc. इन सब की मार्केट में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, हम उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत प्रेस्टीजियस नज़र से देखते हैं, इसके पास एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, डायमंड के ऑर्नामेंट्स हैं या ये चीज़ें। क्यों? बिकॉज दे आर शोइंग देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? उनके स्टेटस को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। नाउ वी आर कमिंग द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द इर्रेशनल जजमेंट। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी को उसकी प्राइस से जज करते हैं, एंड इट इज़ एन इरेशनल जजमेंट। वो क्या होता है? इरेशनल जजमेंट होता है। कंज्यूमर के माइंड में एक परसेप्शन होता है दैट इफ़ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इज़ वेरी लेस, देन ओबियसली देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत कम है तो उसकी क्वालिटी में कोई ना कोई क्या होगा? डिफॉल्ट होगा। बट इफ़ अ पर्टिकुलर प्राइस कमोडिटीज़ प्राइस इज़ हायर, तो उसकी क्वालिटी हमेशा क्या होगी? अच्छी होगी। ये एक परसेप्शन कंज्यूमर के माइंड में है, एंड इसकी वजह से भी क्या होता है? एज सुन एज द प्राइस विल इंक्रीज वी यूज टू डिमांड मोर, एंड इफ द प्राइस विल डिक्रीज वी यूज टू डिमांड लेस। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ पर्टिकुलर मार्केट एंड you just saw a jeans over there, you like the jeans, you asked the particular shopkeeper about the price of the jeans, and the particular shopkeeper gives you the reply that it is of rupees 300 only. In that condition, as soon as you will listen the rupees 300, जैसे आप 300 रुपीज़ सुनोगे तो आपके माइंड में स्ट्राइक करने लग जाएगा that there must be some problem in the jeans and that is why it is of 300 rupees, and you will not purchase it even if you are liking it. अगर आपको पसंद है तब भी आप उसको परचेज नहीं करोगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ irrational judgment. Now we are going to the last one, that is the giffen goods. What are the giffen goods? Giffen goods are highly inferior good. Inferior क्या होते थे? लो क्वालिटी गुड। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें गिफन गुड्स की, तो कंप्लीटली लो क्वालिटी जो गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कैसा होता है इनका? नेगेटिव। दैट मीन्स अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप इन लो क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करना कम कर दोगे, बट विथ साइमल्टेनियसली इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। अगर इनके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो आप इनको क्या करोगे? कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स, जैसे ही इन कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है, देयर डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेज इवन व्हेन दे हैपन्स टू बी रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स। जबकि वो अदर गुड्स के कंपेरिजन में चीपर हो गए तब भी आप इनकी डिमांड क्या कर देते हो? कम कर देते हो। दिस इज़ नोन एज गिफन पैराडॉक्स। क्या होता है बेटा ये? इसको हम लोग बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। एंड इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जितने भी कॉर्स ग्रेन्स होते हैं, जितना जिसको हम लोग बोलते हैं मोटा अनाज, ठीक है, तो कॉर्स ग्रेन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गिफन गुड्स। सो what we have discussed better today we have discussed about the law of demand, its schedulic and diagrammatic presentation. Thereafter we have seen about the why the more of a commodity is demanded when its price falls, या फिर demand curve sloping downward क्यों होता है. Other than that we have discussed about the assumptions of law of demand, and the last that we have discussed, that is the exceptions of law of demand, in which we have discussed about the articles of distinction जो हमारे social status का एक symbol होती हैं, irrational judgment जहाँ हम लोग प्राइस से रिलेट करते हैं क्वालिटी को, एंड द लास्ट वन दैट इज़ अ गिफन गुड्स, हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड हाईली पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। एग्जाम्पल होगा आपका कॉर्स ग्रेन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ गुड डे. स्टे होम, स्टे सेफ.
Thank you very much.